Okay, so we studied about basically about capacitor, and capacitor में special type of capacitor क्या है? Parallel plate capacitor we studied. These are the two plates. Short form I am explaining. These are two plates. आपको positive charge will be there on one plate and negative charge will be there other plate and separated by distance d. Okay, this is plus q, this is minus q. इसका area should be, both the plates का area should be same. Both the area should be same. So two plates, opposite charges will be there. And what is the charge on the capacitor means how much? What is the charge? Plus q we should say. We should not tell minus q, we should say plus q. What is the charge on capacitor means plus q. And इस प्लेट के वजह से एडवांटेज क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड बोलते हैं. ओके, आउटसाइड चार्ज कितना होगा? आउटसाइड चार्ज एग्जांपल आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में, suppose plus q minus q is there. A plate has some thickness, outside charge रहेगा, inside charge रहेगा. Outside charge कितना है? It is zero because outside charge का average formula याद है ना? q1 plus q2 by 2 outside. So it is zero. Outside is zero. Inside positive charge, इसका conservation of charge लगाने से this plus this is this. So this is plus q. मतलब total plus q charge will be coming to this plate and इधर क्या होगा? इधर plus q है तो इधर minus q आएगा. So matlab minus 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 will be attached to this plate. Matlab indirectly electric field will not be outside, only inside only electric field will be there for a parallel plate capacitor. And इसका capacitance का formula सीखा है. Capacitance का, capacitance is the ability to hold charge. कितना charge store कर सकती है, that is the capacitor. Okay, capacitance का formula क्या है? Epsilon naught A upon D is a formula for capacitance. Epsilon naught A by D is the distance between the plates. And दूसरा, this distance is so small that this is acting like a infinite sheet of a charge. So याद है formula? Infinite sheet के वजह से x distance दूर में, what is the formula? याद है? Sigma by एक प्लेट का 2 epsilon. एक प्लेट का, परसों लिखा ना एग्जाम, एक प्लेट का sigma by 2 epsilon is a one plate का. Okay, so these are the basics we learn in this capacitance. And basic formula C equal to Q by V use करने का always. Capacitance is Q by V. This is all we studied in the last 2-3 classes में. C equal to Q by V, where Q is charge, V is potential. And also I told you capacitance does not depend on charge and potential. Capacitance depends on what? Area, distance, medium पर depend होगा. Like I compared also, V equal to IR, R equal to V by I, right? याद है ना Ohm's law? V equal to IR, R equal to V by I. Resistance depends on voltage and current means no. Resistance does not depend on voltage and current. If I double the voltage, the current is also doubled. So 2 to cancel, V by I. So resistance depends on what? R is equal to rho L by A. Similarly, capacitance does not depend on charge and potential. If I double the charge, potential also doubles. So 2 to get cancelled. So capacitance depends on area, distance and medium पर depend होगा. Epsilon naught value मालूम है ना? 8.85 into 10 power of 8.85 minus 12. Good. Okay. So these are the things we studied in the capacitance. So पुराने वाला मिस होता videos देख लो. Okay. चलो. Now we'll go for the energy density of an electric field. Energy density of an electric field. So what is energy density means? Energy stored per unit volume. Some pages showed lo, okay, nearly 8 pages or 7 pages showed lo, and right. Energy stored per unit volume of a capacitor is called as energy density. Energy stored per unit volume. मतलब suppose मान लो this is a capacitor, positive plate, negative plate. Okay. Electric field distance is d. Okay, here I am taking one cube, one unit cube I am taking. Okay, how much energy stored in that unit volume is called as energy density. Kitana energy? I given the formulas also, right? Energy ka formulas, 3 formulas I given the formula sheet also. Energy ka formulas याद है सामने? 3 formulas क्या है? U equal to U is equal to Q square by 2C, which is equal to half CV half QV. QV, which is equal to half CV square. So that is the energy stored.
मुझे टोटल एनर्जी स्टोर नहीं चाहिए, टोटल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसके डेरिवेशन करने वाले हैं। ओके, इसका क्या है विल सी। ओके, सो आपको एनर्जी एनर्जी फार्मूला क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू चाहिए, इसका क्यू चाहिए, कितना क्यू है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। इस पॉइंट में दिस फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टोरियल वी आर एडिंग। एंड सेकंड प्लेट की वजह से, नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स, राइट, टुवर्ड्स E2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is E1 plus E2. Both are in same direction, angle is 0, E1 plus E2. And first plate के वजह से, first plate के वजह से what is the electric field कितना है, it is acting like infinite sheet of charge, right? So this is कितना है, sigma by 2 epsilon naught plus इसका भी sigma by 2 epsilon naught. Therefore it is sigma by epsilon naught, and sigma is nothing but charge per unit area, A epsilon naught. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान रहा हूं, ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान रहा हूं। देयरफॉर क्यू इक्वल कितना है, क्यू इज इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आ गया, बिकॉज एनर्जी स्टोर्ड इन ए यूनिट, एनर्जी स्टोर्ड मालूम है आपको, क्यू स्क्वायर बाय 2c बोल के। एंड इसका कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। नाउ एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। ओके, सो कितना, क्यू क्यू के जगह में ई स्क्वेयर ए स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर बाई 2 इंटू सी के जगह में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन कैंसिल, एक कैंसिल, ऊपर गया तो ई स्क्वेयर ए इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, राइट। मुझे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट एज म्यू, सिंबल इज म्यू, एनर्जी डेंसिटी सिंबल इज म्यू। सो म्यू का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। एनर्जी स्टोर्ड तो फॉर्मूला आ गया ई स्क्वेयर ए डी इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यूनिट वॉल्यूम में देखो आई एम टेकिंग वन क्यूब, ओके, इसका एरिया है ए एंड इसका डिस्टेंस इज नथिंग बट डी ओनली, इसका लेंथ इज डिस्टेंस इज डी। सो व्हाट इज द वॉल्यूम, area into length is nothing but volume, right? So area into length we are taking of this volume, area into length. So kitna hoga, a cancel, this one cancel, something we are using is a 2 missing है, by 2 है ना, so 2. So finally kitna आया, half epsilon naught e square. This is the formula for energy density, half epsilon naught e square. This will be coming in the electromagnetic waves also. See, name itself indicating electromagnetic waves, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका एनर्जी रहेगा ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर। सेम एक्सप्रेशन विल बी कमिंग इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड इसका एसआई यूनिट्स क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी, राइट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो इसका यूनिट्स कल जूल्स पर मीटर क्यूब। नोट अच्छे से बनाओ। मार्क्स देकर कभी भी डीमोटिवेट मत हो जाओ। आई सॉ ए पर्सन हु गॉट नॉर्मल इन कॉलेज में, टोटल इयर्स में 90s भी आता था, बट दे गॉट 99.9 परसेंटाइल एंड दे आर इन 90s ऑलरेडी स्टडीइंग इन थर्ड इयर्स। सो अब मार्क्स का टेंशन नहीं है, आपका हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। एडवांस बाजू में रखो, गो फॉर मेंस इनिशियली। आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, चैलेंजिंग करेंगे बोले तो थोड़ा एडवांस में पीवाईक्यूज करो, धीरे 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 चैप्टर वाइज करो। ओके, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, कवर्ड, यस, हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, दिस आर द टू प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट।
separated by distance d, and electric field is from positive to negative, plus q minus q. Okay, so what will happen, इसमें इसमें एयर है, we are not putting any material. इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगा, it will attract some with some force, and similarly this negative plate is positive plate को attract करेगा with some force, and both are equal and opposite. That force only we are trying to calculate. Okay, मतलब force, that is a disadvantage of parallel plate. क्या होगा मालूम है, if I put like this, वो दोनों अटैच हो जाएगा, अटैच होने से पूरा चार्ज गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड कैपेसिटर काम नहीं करेगा. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आगे पढ़ने वाला डाइलेक्ट्रिक बोल के आएगा. ओके, सो एयर कैपेसिटर, टिल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एयर कैपेसिटर ओनली, देयर इज नो मटेरियल इनसाइड इट. ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट फोर्स. ओके, एक प्लेट का वजह से फोर्स फाइंड किया तो बस है, सेम विल बी दिस वन. सो फोर्स ऑन 2, वी आर कैलकुलेटिंग force on 2 due to electric field of first plate. ये फॉर्मूला याद है आपको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा. इलेक्ट्रिक फील्ड में इफ आई पुट ए प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स विल बी एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में. हाँ, गुड, वेरी गुड, QE. एंड नेगेटिव चार्ज है तो minus QE in the opposite direction. Force will be QE only, but opposite direction. Okay, वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला है. देखो, इस प्लेट के वजह से there is electric field, there is electric field at this place. So मतलब इस प्लेट के बारे में माइनस Q electric field because of first plate, there is the electric field, and negative charge is placed in the इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसके ऊपर फोर्स लगेगा, F लगेगा. सो F का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू QE एंड Q इंटू E. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, एक प्लेट के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट. तो सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर फोर्स फॉर्मूला है Q स्क्वायर बाई 2a epsilon naught. This formula, or 2 epsilon naught a. Q square by 2 epsilon naught a is a formula. Force between two plates. Always, मतलब मटेरियल रखो नहीं रखो, फोर्स एक्ट होता जाएगा, इतना ही फोर्स एक्ट होता जाएगा. Q square by 2 epsilon naught a. बेटा राइट फॉर्मूला लिख रहे हैं, कर रहे हैं ऐसा, पूरा नीट नोट्स लिख लेना, नोट्स लिखो, लास्ट में बहुत काम आएगा. पास वास देखने में लास्ट 1 मंथ बाकी है, 10 डेज बाकी है, दैट टाइम नोट्स पढ़े तो हो जाएगा. ओके, सो दीज आर थिंग्स. दूसरा, वी स्टडीड फर्स्ट वन कैपेसिटर, वी स्टडीड आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, वी स्टडीड. Second, we studied about the parallel plate capacitor. Okay, I told you 2 more capacitors are there. One is, concentric spherical capacitors are there. Two spheres will be there. And तीसरा वाला, you have cylindrical capacitor will be there. Okay, that capacitors also learn करेंगे. Sometimes JEE mains में भी they will ask. चलो, spherical capacitor. Spherical capacitor. Okay, so a spherical capacitor consists of 2 concentric spherical conducting shells. So those shells, because you know that आपको minimum 2 plates are required per capacitor के लिए. Okay, so that's why 2 concentric spherical conducting shell ले रहे हैं. Outer shell I am making earthing, and inner shell is given to the plus Q charge. Okay, so क्या है, this is 2 concentric shells are given. Outside में there is earthing है given, and inside में I am giving a charge Q, and इसका radius is A and इसका radius is B. Okay, अभी पुराने concepts भी आएगा इसमें. So this is the, now this is acting like a one spherical capacitor, एक AB capacitor. क्यों act होगा we will see in derivation में, कैसे act हो रहा है, क्यों हो रहा है बोल के. Okay,
देन इसका कैपेसिटेंस फॉर्मूला लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए. बी माइनस ए नथिंग बट रेडियस, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, ए बी. याद है फर्स्ट वन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का C इक्वल टू 4 pi 4 पाई epsilon. एप्सिलॉन आर. ओके, Yeah. सो सिंगल आइसोलेटेड वाला 4 पाई एप्सिलॉन आर. बट ये दो है ना, दैट्स वे आर के जगह में 4 पाई एप्सिलॉन आर के जगह में ए बी बाई बी माइनस से. याद रखो ऐसा, ए बी बाई बी माइनस से. कैपिटल मैं इसका डेरिवेशन करने वाला है, ओल्ड टॉपिक्स आएंगे. कवर्ड. C is equal to 4 pi epsilon AB by B minus A. पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है आपको? कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड कितना है? आउटसाइड इज पोटेंशियल इज हाउ मच? KQ by R. स्मॉलर कैपिटल? Smaller. स्मॉलर. सरफेस में KQ by R. स्मॉलर Capital कैपिटल, कैपिटल. इनसाइड में KQ by capital R. हाँ श्योर, KQ by कैपिटल. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड, बट इसमें पोटेंशियल इज कांस्टेंट, राइट? वो यूज होने वाला है ये वाला. ओके, इसका डेरिवेशन करेंगे. डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सम कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी ओल्ड टॉपिक्स का रिवाइज होता जाएगा. चलो, तो दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर, radius A, B, and outside is earthing I done, and inside I'm giving a plus Q charge. You tell me, when I done earthing, what is the total potential on that spherical capacitor is? Total potential is 0. 0. Total potential is 0. And charge is will be 0? No. No, not charge will not be 0, right? Charge अभी फर्स्ट फाइंड करेंगे चार्ज कितना है उसके ऊपर. मान लो ये प्लस क्यू दिया ना, इधर प्लस स्मॉल क्यू. हाँ, फाइंड करो. हाउ टू फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वी डन राइट. तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. टोटल पोटेंशियल इज 0, राइट? टोटल पोटेंशियल इज 0. किस वजह से टोटल पोटेंशियल? इस चार्ज की वजह से आल्सो द पोटेंशियल इज 0, एंड इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल इज 0. सो बिकॉज ऑफ फर्स्ट शेल प्लस बिकॉज ऑफ सेकंड शेल, total potential is 0. Okay, for first shell this point is acting like a outside point, right? So a outside point. And for second shell this point is acting like a surface point. Anu, use the formula and tell. Minus Q. Good, minus Q. So outside point is K Q by outside small r के जगह में B, इसका प्लस K Q, surface point is again B only, बड़ा रहेगा इसका, equal 0. So K by B cancel. So therefore Q is equal to minus Q. So पहले आपको minus Q हो गया, चार्ज आ गया, राइट? फर्स्ट स्टेप इज चार्ज आ गया. नो देखो कहां से क्या जा रहा है बोल के. नो कैपेसिटर जैसा कैसा एक्ट हो रहा है, वी विल सी. कैपेसिटर क्यों है? कैपेसिटर के लिए आपको पॉजिटिव प्लेट चाहिए, नेगेटिव प्लेट चाहिए, देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड, राइट? हाँ, नो देखो ये सेकंड शेल का थिकनेस विल बी देयर, सम थिकनेस विल बी देयर सेकंड शेल का. इफ यू टेक ए कॉन्सेंट्रिक शेल का थिकनेस विल बी देयर, राइट? सो मैं क्या करूंगा, टोटल आउटसाइड शेल में कितना है? माइनस क्यू. ओके, सो मैं थिकनेस बना रहा हूं. थिकनेस बना रहा हूं. मान लो द मटेरियल हैज सम थिकनेस. ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग ए मटेरियल के अंदर में आई एम ड्रॉइंग वन गॉसियन सरफेस.
मटेरियल में, मटेरियल में आई एम ड्राइंग वन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द गॉस लॉ फॉर्मूला. टेल मी गॉस लॉ का फॉर्मूला. फ्लक्स इज इक्वल टू, याद है, Q by epsilon naught. Q inside by epsilon naught, right? So Inside. mathematical formula क्या है फ्लक्स का? क्लोज इंटीग्रल E E dot dot dA. This is through maths. And Q inside by epsilon naught. You tell me electric field inside the material is how much? Electric field inside the material is how much? Tell me. Electric field of a inside मतलब in a hollow shell में कितना है electric field? 0. जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सरफेस इनसाइड जीरो, राइट. इनसाइड कौन सा जीरो है? 100% वाला. इनसाइड मटेरियल में जीरो है. ओके, इनसाइड अगर मैं चार्ज रखूंगा मे बी नॉट जीरो, बट इनसाइड मटेरियल में तो 100% जीरो है. इफ आई सब्स्टिट्यूट E इक्वल जीरो इन दिस, बिकॉज इनसाइड मटेरियल में इफ आई सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एप्सिलॉन नॉट इनटू जीरो इज जीरो, देन Q inside is how much? Q inside is zero, right? You got it? Okay. Now Q inside is zero means इस Gaussian surface में inside plus Q charge is there, then inside the ये inside में कितना चार्ज होने का? Minus Q. Minus Q. Now देखो, that means total charge is minus Q only outside में. That but minus Q is going completely inside. Okay. If you see zoom करके देखिए तो वो inside में minus Q चल जा रहा है पूरा. Okay. Now tell me outside में charge कितना होगा? 0. आउटसाइड सेल में जीरो, राइट. जीरो. इधर कंसिडर. नॉर्मली हम लोग बोलते हैं माइनस क्यू बाहर, बट जूम करके देखने से आपको थिकनेस के वजह से इनसाइड इज माइनस क्यू, आउटसाइड इज जीरो. ओके, नाउ इफ यू सी केयरफुली, नाउ दिस प्लस क्यू चार्ज, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. देखो ए प्लस क्यू चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली हियर, and this minus q charge is distributed uniformly inside the thing. Minus. Now देखो electric field is from positive to negative. Now देखो कैपेसिटर बन गया. This is a capacitor. And reason of earthing क्यों कर रहे हैं outside? Because आपको जीरो आने के लिए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी बाउंडेड, आउटसाइड नहीं रहने का. उसके वजह से वी आर पुटिंग द अर्थिंग के कहानी की वजह से दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग. ओके. Now you got a capacitor. इसका capacitance we are trying to find now. Okay. Now capacitance का formula क्या है? C is equal to Q by delta V. Right? This is the formula. Q by V होता था, but since two plates are there, we are using delta V. Okay. So C is equal to Q by positive plate का potential minus negative plate का potential. Always positive plate का potential minus negative plate का potential. Okay. V2 कितना है? Potential second plate का potential is जीरो. सेकंड प्लेट का पोटेंशियल जीरो. मतलब अगर V1 फाइंड करूंगा देन कलस आई विल गेट अ कैपेसिटेंस. सो C इज इक्वल टू Q by V1. टेल मी V1 फाइंड करो. बिकॉज ऑफ प्लस Q चार्ज, बिकॉज ऑफ माइनस Q चार्ज, फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. V1 फाइंड करो. फर्स्ट सरफेस के ऊपर पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना है? विथ साइन रखना पड़ेगा, राइट. चार्ज को विथ साइन रखना पड़ेगा बिकॉज स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल्स. KQA minus K by AB. हाँ नहीं, उतना कॉमन नहीं लेने का, बाद में. सो के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी. Minus KQA. हाँ. सो क्यू कॉमन ले तो के क्यू कैंसिल हो गया. कितना होगा? के भी कॉमन लेंगे. क्यू बाई के क्यू कॉमन ले तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी. सो क्यू क्यू कैंसिल. ये क्या होगा? ऊपर बी माइनस ए, ऊपर क्या होगा? ए बी, राइट. सो सी इज इक्वल टू ए बी बाई बी माइनस ए. एंड व्हाट इज के? इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस एक्सप्रेशन, राइट. 4 pi epsilon naught AB by B minus A. Why we done derivation? Because Gauss law आपको समझ में आ गया, potential find करना आ गया, earthing का questions आ गया, and many formulas you learned from this. That's why we went for derivation. So 4 pi epsilon naught AB by B minus A is the formula.
ओके चलो कवर्ड ओके now देखो same thing now right we no need of deriving now देखो this is A this is B and inside there is a earthing now and outside if I given a plus q charge okay at that time what is the capacitance so same concept capacitance का formula लिखो 4 pi epsilon naught b square by b minus a if you do the same procedure वगैरह किया तो आपको आंसर आएगा ये लर्न करो ऐड करो 4 pi epsilon naught b square by b minus a now next one will be the you know next one will be the cylindrical capacitor cylindrical capacitor क्या है same thing a cylindrical capacitor consists of two coaxial long cylinders the outer one is earth and inner one is given to a plus q charge inner one is given to a plus q charge देखो two coaxial cylinders है outside I am giving the earthing and inside I am giving a plus q charge inside radius is a and a radius is b outside radius is b then उसका capacitance का formula है 2 pi epsilon naught L. L is the length of the cylinder by log B by A to the base C. ये log terms में आएगा 2 pi epsilon naught L by log B by A to the base C. This is the formula. लिखो इसका भी डेरिवेशन करने वाला है थोड़ा ऑल इज विल बोल के मान लो थोड़ा हार्ड है करो Why we are doing derivation because आपको concepts उसमें आ रहा है okay now we will derive the expression for this one cylindrical capacitor का derivation copied right here चलो so this is small cylinder and this is big cylinder इसका radius is A इसका radius is B outside I doing earthing and inside I given a plus q charge okay if I given a plus q charge previous में भी done right earthing का वजह से वो गॉस लॉ वगैरह लगा था ऊपर वाला 0 है एंड इनसाइड वाला माइनस q हो जाएगा राइट ये तक तो होता है ना नाउ इसका कैपेसिटेंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड कैपेसिटेंस का वी आर ट्राइंग टू फाइंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था q बाई डेल्टा v इज नथिंग बट q बाई पॉजिटिव प्लेट का v1 माइनस v2 वी आर ट्राइंग टू फाइंड ओके बट वी डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ द v1 माइनस v2 राइट बिकॉज स्पीयर का तो लर्न किया बैड कर दिया बट सिलेंडर का नहीं मालूम ना v1 माइनस v2 सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग इज v2 तो 0 है ना मतलब v1 फाइंड करेंगे खत्म हो जाएगा q बाई v1 ओके सो आपको क्या करने का v1 आने के लिए वी विल यूज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड here from a positive plate say negative plate when you are going this is first plate this is first plate second plate first plate से second plate जा रहा हूँ electric field is constant uniform or non-uniform from if you are going from positive to negative going away when you are going away we derived the thing right it is inverse relation so distance so as we go away from the positive plate the electric field goes on decreasing inverse relation okay मतलब it is a non-uniform field and non-uniform field में what is the relationship between potential difference and electric field tell me delta v is equal to याद है v dot dr that is dv is equal to delta v is equal to minus non-uniform field इंटीग्रल a to b e dot dr बोल के लगाया ना वो वाला वो यूज करने वाला है to find the potential difference I am going from फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट आई एम गोइंग
So what is the potential difference? V2 minus V1. V2 minus V1, right? 1 to 2 we are going. So final minus initial is equal to minus integral first to E dot dr. This is a relationship we learned when the electric field is non-uniform. मतलब अभी electric field find करने से we'll get the potential difference. Then only I can substitute here, we'll get the answer. Okay. Electric field कैसे find करेगा? Tell me. How to find electric field because of this cylinder में इसका electric field कितना है? We studied in the गॉस लॉ एप्लीकेशंस में सिलेंडर्स बोल के एक टॉपिक है पढ़े. हाँ, तो थोड़ा गॉस लॉ यूज करके डिराइव करेंगे. सो गॉस लॉ के लिए क्या था? व्हाट वी डन, टेल मी. व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट वी आर डूइंग, उस पॉइंट में से वी आर ड्राइंग द गॉसियन सरफेस, राइट? एंड याद है डी ए वेक्टर लगा के फ्लक्स फाइंड करके क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं. वही कॉन्सेप्ट इधर लगाएंगे. ओके, चलो मैं क्या करूंगा, इधर से आर डिस्टेंस दूर जाके आई विल मेक ए गॉसियन सरफेस. सिलेंडर में सेम किया, सेम स्टेप्स भी डन. आर डिस्टेंस दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया एंड फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू सी द हाउ मेनी सरफेस आर देयर इस गॉसियन सरफेस का 1 2 and 3 कर्व्ड सरफेस, राइट? इसका एरिया वेक्टर इज डी ए वेक्टर इज हावे ऐसा आउटवर्ड नॉर्मल, इसका डी ए वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल एंड इसका डी ए वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल. So can you tell me what is the electric field because of dA vector? Electric field is like this. Angle is 90. So flux is how much? इसका 0. हाँ, इसका भी 0. 0. इसका कितना होगा? दोनों सेम एंगल, राइट? cos 0 is 1. So क्या होगा? E dA, right? E is at this point में electric field is constant, right? So E will be coming outside and integral dA मिल गया तो क्या होगा? Area of the curved surface area. What is the curved surface area? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. 2 pi r. सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ 2 pi r l. 2 pi r l इज इक्वल टू क्यू इनसाइड. इनसाइड कितना चार्ज है इस गॉसियन सरफेस का? अंदर में इज ओनली प्लस क्यू, राइट? Yeah. सो प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? क्यू बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट r l. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r. Same expression we done. Okay, electric field we found, right? Outside, inside surface में, in cylinder में. Okay, now I will substitute this in this expression. V2 minus V1 is equal to minus integral 1 to 2 means one point is A is the radius and second point is B. So A to B, E के जगह में Q by 2 pi epsilon naught RL. And electric field and dr vector is same direction, cos 0 होगा dr. So ये बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेट करो नो, कितना होगा? माइनस v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस q by 2 pi epsilon naught l. इंटीग्रल ऑफ 1 by r dr will be Log. log में आ गया अभी. log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log बेस्ड, ठीक है? a and b. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l. log b माइनस log a. सो log b बाई a to the base e. दिस इज व्हाट? v2 माइनस v1. ओके, मुझे क्या चाहिए? v1 माइनस v2 चाहिए ना. सो क्या करेंगे? इसको उल्टा किया तो क्या होगा? इसका उल्टा किया तो ये माइनस निकल जाएगा, माइनस लिखो में. सो देयरफॉर v1 माइनस v2 is equal to q by 2 pi epsilon naught l log b by a to the base e. Now substitute this expression in this. So capacitance क्या आएगा? q by q into log b by a to the base e upon 2 pi epsilon naught ऊपर क्या तो 2 pi epsilon naught l. q cancel. So therefore capacitance is 2 pi epsilon naught l by log b by a to the base c. This is the capacitance of a cylindrical capacitor.
डेरिवेशन क्यों करवाया? बिकॉज गॉस लॉ का एप्लीकेशन समझ में आया एंड रिलेशनशिप ऑल्सो यू अंडरस्टूड हियर. तो ओल्ड कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करने वाला है. नेक्स्ट में वी हैव टू गो फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस. अब लोग रेसिस्टेंस का कैसा है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स आएगा एंड रेसिस्टेंस भी आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में. नेक्स्ट चैप्टर विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी. सेम पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन जो भी हम लोग किया 10th क्लास में पूरा आने वाला है. रेसिस्टेंस का टाइप्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स, तो डेप्थ में जाने वाला है. ओके हो गया इधर तक? चलो, सो फॉर्मुलास बैठ करके नेक्स्ट क्लास तक आई विल आस्क. नाउ विल गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. लिखो combination of capacitors. कितना combinations are there? Combinations कितना होगा? Series and parallel combinations. Okay, that only we are seeing. And capacitor का symbol है, अब इसे ऐसे यूज कर. This is a capacitor symbol. ये पूरा प्लेट्स में नहीं करने का, ओनली सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा है कैपेसिटर. एंड बेसिक फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q बाई V. ये तो आपको ओम्स लॉ कैसा याद करिए कि R इज इक्वल टू V बाई R, V बाई I ऐसे कैसे किया, ऐसे सेम थिंग वी हैव टू बाय हार्ट दिस वन. C इक्वल टू Q बाई V. एनी टू वैल्यूज विल बी गिवन, थर्ड वैल्यू यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके चलो अब देखेंगे. फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. आवर इंटरेस्ट इज टू कैलकुलेट C इक्विवेलेंट. C इक्विवेलेंट. ओके हाँ, आई लास्ट रेसिस्टेंसेस में सीरीज में व्हाट इज R इक्विवेलेंट? रेसिस्टेंसेस सीरीज 10th क्लास R1 plus R. R2 plus R3 so on. Okay, Yeah. पैरेलल में 1 by R equivalent is equal to 1 1 by by R1 plus 1 by R2 plus 1. इसका एग्जैक्टली कैपेसिटर का उल्टा होगा. जो पैरेलल में है ये सीरीज का आएगा इधर. सो व्हाट इज इसमें व्हाट इज C इक्विवेलेंट इसका? इसमें सीरीज में व्हाट इज द फॉर्मूला विल बी 1 by C इक्विवेलेंट 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1. पैरेलल में क्या होगा? C1 plus C2 plus खत्म. वो यूज करने वाला है, ए डेरिवेशन भी करने वाला है. अंडरस्टैंड करो. सो सीरीज यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई. दिस इज वन कैपेसिटर, दिस वन कैपेसिटर, दिस वन कैपेसिटर. दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. यू नो बाजू बाजू में अटैच होगा ना. बाय सीइंग वी शुड फिजिकली आल्सो वी शुड चेक वेदर सीरीज और नॉट बोल के. ओके नाउ आई कनेक्टेड विद अ बैटरी V. V. ओके इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3. ओके सो दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस नेगेटिव प्लेट. नाउ इधर आपको समझ में आने का क्या चल रहा है क्या बोल के. बिकॉज ऑफ यू नो व्हेन यू ऑन द स्विच क्या होगा, चार्ज विल बी फ्लोइंग एंड ये प्लस Q चार्ज आएगा, कैपेसिटर गेट चार्ज, राइट. एंड इस if it is a plus Q, इसका ऑपोजिट प्लेट विल बी माइनस Q. समझ में आया? माइनस Q. ओके नाउ देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली वी कैन पुट द चार्ज बट अंडरस्टैंड करो. आइसोलेटेड प्लेट्स का एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो. सम क्वेश्चंस आपको आइसोलेटेड प्लेट्स का क्वेश्चंस भी आएगा, मेंस में भी आया. अंडरस्टैंड करो. देखो दिस प्लेट एंड दिस प्लेट is isolated. Why it is isolated? Whether this is connected with the battery directly, this plate, no, this plate is also not connected with any battery. These are isolated, touch नहीं है. Isolated plates का total charge is always 0. कभी भी याद रखो, isolated plates का total charge should be 0. Now tell me, minus Q है, इधर कितना charge होगा? So the total charge should be 0. So it is plus Q. If this is plus Q, opposite में minus Q. Again isolated charge है, plus Q, and this is plus Q means this is minus Q. Now here, what is the total charge on this capacitor C1? Tell me, what is the total charge on this capacitor? Plus Q or minus Q? Total charge is capacitor C1. Plus Q. Plus Q. इसका C2 का? Plus Q. इसका? Plus Q. That Plus means charge is same for all capacitor in series. उधर current is same. इधर charge is same for all capacitors. Series में. And if I put the V1, C is equal to Q by V, V is equal to Q by C, right? So Q by इसका C is C1, इसका V2 कितना होगा? Q by C2
इसका C3 will be Q by C3. I am interested to calculate C equivalent. So मैं क्या करूंगा, ऑल कैपेसिटर को कंबाइन करके वन कैपेसिटर बनाऊंगा. I call that as C equivalent, and their potential V and total charge is Q. So therefore, what is V is equal to Q by C equivalent, right? Potentials we are finding. And what is the relation between V, V1, V2, V3 in series में? V is equal to V1 plus V2 plus V3. Always. इसका voltage is equal to this plus this plus this. Now substitute करूंगा. V के जगह में Q by C equivalent is equal to V1 के जगह में Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. So Q cancel. Therefore, for series का 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Khatam. This is a formula for C equivalent, which is exactly ulta of the resistance. 1 by C1 plus 1 by 2C2 plus 1 by C3. Understood, right? So now देखो एक स्पेशल केसेस लर्न करेंगे. For two capacitors C1 C2, some shortcut is there. For two capacitors, find and tell me what is C equivalent for two capacitors C1 C2 are connected. What is the formula we'll use? 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. तो इसको LCM ले तो C1 plus C2 by C1 C2 1 by C equivalent. Therefore C equivalent कितना है? C1 C2 by C1 plus C2. ये शॉर्टकट यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग C equivalent. बार बार देखो ये करने से क्या डिसएडवांटेज है, आपको उल्टा करना पड़ेगा. 1 by C equivalent के जगह में उल्टा करना पड़ेगा. Then only C1 C2 by C1 plus C2 यूज किया तो डायरेक्टली विल गेट द आंसर. Okay. For 2 only we should write. 3 है तो don't multiply C1, C2, C3. Again we have to use 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Okay. Tell me. Suppose मान लो 2 microfarad. देखो microfarad is nothing but capacitance. Farad is nothing but capacitance. Suppose 6 microfarads. They connected in series. What is C equivalent? कितना होगा? C equivalent कितना होगा? C1 C2 by C1 plus C2. Always use a shortcut. ना मल्टीप्लाई कर लो, उसमें क्या है? 6 into 2. हाँ 6 into 2 C1 C2 मल्टीप्लाई किया तो कितना? 12 by C1 plus C2. So 2 plus 6 is 8. So 12 by 8. So it is 3 by 2. That is the answer. So don't use 1 by C equivalent for two capacitors. Directly use करो ये वाला. Okay. Now tell me इसका answer. For n equal capacitors connected in series, what is C equivalent? Suppose I connected n times C. So what is C equivalent? N by C. C by N. Sure. Yeah. C by N is the answer. देखो two capacitors suppose connected C1 C2 by C1 plus C2 అంటే C square by 2C, C by 2 आया. 3 है तो C by 3, 4 है तो C by 4, N है तो C by N. So C equivalent is C by N. This is the thing we learned. Okay.
और मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज वो हो गए तो देन नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करने वाला है। ओके लिखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सपोज मान लो यू हैव टू कैपेसिटर्स 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड, सो व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट इसका? C1 C2 by C1 plus C2 कितना? 6 into 3 18 by 9 2 microfarads. Micro is 10 power minus 6. Okay, this is a capacitance. This capacitance is lesser than individual capacitance. That only saying equivalent capacitance always less than the any of the individual capacitance. This 2 is less than 6 and 3 in series mein always. And last point, charge on each capacitor is same, potential is divided. Can you tell me what is the ratio of V1 is to V2 is to V3 in terms of capacitance? We done series combination mein V1 is what? Q by C1 is to Q by C2 is to Q by C3, right? So Q cancel. 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3. Sometimes capacitance will be given to you in series mein. They will tell to find potential difference, potential ka ratio. So simply it is reciprocal in series mein. 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3. So इसका न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड देन विल गो फॉर पैरेलल भी करके देन कॉम्बिनेशन करने वाला है। डिफरेंट टाइप्स आर देयर, सो मच डिटेल में वी हैव टू गो।